ECP کو ضرورت نہیں تھی سر, وہ پولیس کو کیا, سیکورٹی مانگ رہے تھے, پولیس کو کیا. تو پیج 13 پہ لیٹر لگا ہوا ہے ECP کا, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وینیو بتا دیجئے, ایکسپیکٹڈ اسٹارٹ اینڈ کنکلوژن ٹائم بتا دیجئے, لسٹ آف پولنگ اسٹاف بتا دیجئے, لسٹ آف پارٹیسپینٹ بتا دیجئے, ایکسپیکٹڈ نمبر آف وہیکلز آپ کو کتنی چاہیے یہ بتا دیجئے. جی یہ ایک لیٹر پیج 13 پہ آپ ہی کی پیپر بک جی میں. بالکل بالکل, یہ انہوں نے ہم سے کہا, بتایا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی یہ وینیو ہے اور یہاں پہ ہمیں سیکورٹی چاہیے. ہم نے پورے پشاور کی سیکورٹی کا ایشو تو نہیں تھا نا, وہ تو آپ کو جہاں وینیو پہ الیکشن کرنے تھے وہ والی جگہ کی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے. جی, تو وہ ہم نے پھر سیدھا ڈائریکٹلی جب انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا آئی جی کو, ہم نے ڈائریکٹلی آئی جی اور لیٹر میں آئی جی کے بعد آپ کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ اس کا ہم نے جواب نہیں دیا, نیاز اللہ صاحب کے نام پہ ہے, اور یہ 30 اس کا ہم نے رائٹنگ میں جواب نہیں دیا. 23 کا لیٹر ہے یہ, اس کا جواب لگا ہوا ہے اس میں. جی, اس پہ جو 30th والا لیٹر ہے سر, وہ یہ جو لیٹر آیا تھا ہمیں اس کا رائٹنگ میں جواب نہیں دیا, لیکن ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہی ٹیلیفونکلی, اینڈ وی سیڈ, اس کے بعد ہم نے پولیس نے وزٹ کیا سر دا سائٹ, اور یہ پھر ایٹ پیج 16 یور لارڈشپ ول سی کہ all the newspapers actually published it. PTI انٹرا پارٹی پیج 16, PTI انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جگہ کا تعین ہو گیا ہے. پشاور انٹرا پارٹی الیکشن رانو گھڑی میں آج ہوں گے. So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر, ایون یہ جو تھے, ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے, اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا ہوا ہے. ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا, بٹ ان اینی کیس ہی واز الاؤڈ ان ٹو کم ان ٹو دا آفس. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. آج تک انہوں نے اپنا پینل نہیں دیا, ابھی بھی نہیں دیا آپ کے سامنے کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے, وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے, ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن, وی وڈ سرٹنلی, وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن, اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سر, آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر, سیدھا نیکسٹ پیج پہ 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, your lordship, I'm going to pass عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟
سر پینل ہے نا جی, نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر, ہاں ایکسپلین نہیں کیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں. جی, Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر, یہ بھی نامینیشن پیپر. ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں, ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا. نہیں سر, nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں, if your lordship turns to page 17, yes, page 17. نہیں, دو الگ الگ باتیں نا. جی, یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فور چیئرمین, جی, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے, تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں, اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے. جی جی, مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے, جی, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. جی, secret ballot. جی, ٹھیک ہے, on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا. اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دس از نارمل کامن سینس, بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے, اگر آپ الیکشن ایک شخص نے, مفروضہ کر رہا ہوں جی, آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا, کریکٹ, ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا, جی, پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا, جی, شیل بی الیکٹڈ. ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی کہ اچھا جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1 لاکھ نے دے دیا. سر ان فیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو انپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. سو نہیں, دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی. برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ, مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1 لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی, ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب جنرل الیکشنز بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں سب ٹھیک ہے, but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it, کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. یہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا, آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes. کہ آپ کو کاسٹ کرو بھائی, کوئی بھی نہ ہو, آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز 1 ووٹ نہیں پڑتا, پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا, یا سپوز 10 ووٹ آپ کی ممبرشپ کے 8.5, جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں, صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے, لاکھ میں سے,
تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ, آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا, پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف. ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا, ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. اب پھر آپ دیکھیں اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں, آپ نے ایک پینل بنا لیا, وہ جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ, آپ نے کہا یہ بس یہ جی الیکشن ہو گئے. گور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا, انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے, نہیں آپ کی بھائی آپ بھی الیکشن دیکھیں, آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے to be honest I was elected unopposed. So I actually کیا منسٹر کے لیے مجھے نہیں, وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. سر on the technocrat seats there were 2 seats. اچھا ٹیکنوکریٹ کا الگ وہی ہے. لوگ تھے, میں اور ایک تارڑ صاحب. اچھا اچھا, آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں نے سیکرٹری جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا. نہیں مگر ایک بات دیکھیں, سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, سارا پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا, تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا سو کہیں گے, سلیکشن ہو گیا, کیا ہو گیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ اس لک ایٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایٹ پیج 315, اگر آپ آ جائیں. تو ویسے کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن, مطلب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو کرو کرو, بابا کرا دو. پہلے کیوں نہیں کیا؟ آجو بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن, دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سر جون میں, وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچوئل نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ, چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اپنے لیے آپ دیکھیں یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو. پھر ذرا یہ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ لیٹ اس لک ایٹ دس, since we are talking about this, پیج 315 پہ ذرا دیکھیے, 314 and 315. آپ یہ دیکھیں گے اب آپ دیکھیں سر پیپر بک 2 کی بات کر رہے ہیں جی. So your lordship will see کہ they have the election commission کی ہی اپیل ہے, اس میں انہوں نے پی ایم ایل کا لکھا ہوا ہے, میاں نواز شریف پریزیڈنٹ unopposed, مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ unopposed, احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل unopposed, etc. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, نہیں آپ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر unopposed political parties کا ایک انپوز یقیناً ہو سکتا ہے. اب جیسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی, شاید وہ انپوز آ جائیں, جی, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک چھوٹا سا پوسٹ بھی انپوز آ رہا ہے. بلوچستان کا پتہ نہیں سیکرٹری ورکرز ونگ کا ہیڈ, وہ بھی انپوز آ رہا ہے. اب 319 دیکھ لیجیے, 319. اب یقیناً آپ کھڑے ہوتے شاید آپ انپوز آ جاتے, مان لیتے ہم, کیونکہ بھائی چلیں آپ وابستگی ہے, آپ کام کر رہے ہیں پارٹی کا, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے. So it's not unusual that 319 دیکھیے سر آپ کی نیکسٹ. نہیں مگر دیکھیں ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں, تو میں خیال آپ کو انٹرسٹنگلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں, عوامی نیشنل پارٹی کا ایون district presidents have been elected unopposed. دیکھیں اسی لیے تو ہمیں آپ کا منشور تو بڑا اچھا لگا, مگر یہ پینل والی بات شاید مجھے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر الیکشن مینز الیکشن, امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اے ایف پی کو بھی پروبیبلی کوئی پرابلم تھا, یا تو ان کو فائن لگایا کچھ, ان کو 20,000 کا فائن لگایا جنہوں نے, اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن, آج یہ آرڈر آیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن اپنا بعد میں کرا لیں, سمبل آپ کو دے دیتے ہیں, ابھی فائن کر لیں. تو اٹس جسٹ کم آؤٹ. اگر آپ کا مسئلہ بہت زمانے سے چل رہا ہے,
जी अच्छा सर कमिंग देखिए, अब देखिए आर्टिकल 17 पार्टी फंडिंग की भी बात करता है, उसमें तो सिंबल की बात नहीं मगर पैसों की तो बात कर ली। वो तो है, वो कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी आप 2014 से वो इशू पे भी बात को चलने ही नहीं देते हैं आगे। मतलब देखिए अब इसमें देखिए जरा आप एक और इसमें पहलू है जो कि बहुत नाजुक पहलू है। मुल्क कौन चलाता है? मुल्क वो सियासी पार्टी चलाएगी जो मुंतखब हो जाए, ठीक है। सियासी पार्टी तो कुछ भी नहीं है ना, एक नाम है। आप कल अपनी पार्टी का नाम बदल लें तो मतलब पार्टी तो वही रहेगी ना। तो वो लोग कौन होते हैं? पब्लिक को तो पता तो होना चाहिए कि हाँ ये लोग पता नहीं हमारे दुश्मनों से सौदा तो नहीं कर लेंगे, कोई और मसला नहीं खड़ा करेंगे, इनका बैकग्राउंड ये है, हाँ यार मैं जाना पहचाना आदमी, चलो हम ये। बीच एक दो लोग आपस में कभी हो जाती खिचपिच, हर पार्टी में होती है ऐसी। मतलब जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि उसमें डिस्प्यूट होता है। अब आपके दूसरे कल वो थे ना, हमने खोसा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में, अब मैं आपकी पार्टी में। ठीक है, वो कोई बात नहीं, होती रहती, मगर पार्टी जब तक किसी को निकाले नहीं या वो आदमी खुद छोड़ के ना चला जाए तो फिर तो उसको आप अपना माने, चाहे बेशक आप उसको अच्छी नज़र से ना देखें या कुछ लोग पार्टी में। मगर देखिए हर आदमी वो एक ही बात करेगा तो फिर बात किसी बात पे कोई आप सुनना नहीं पसंद फरमाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ ये इकॉनमी यूं चले, वो सब कहेंगे जी यस सर। वो दूसरा आएगा तो मैं कहता हूँ इकॉनमी यूं चले, कहेगा जी यस सर। तो फिर वो कहेगा नहीं जी ऐसे नहीं, शायद ये बेहतर है, शायद वो बेहतर है, हो सकता है फिर उस पर वोटिंग हो जाए, नहीं ऐसे करना चाहिए, चलो भाई IMF से मुआहदा कर लें, IMF से नहीं मुआहदा करें भाई, चलो भाई ठीक है। तो जब हमें पब्लिक को क्या पता है, एक कागज का टुकड़ा आया, अब आप बुरा ना माने क्योंकि गौर साहब हमारे सामने खड़े हैं और कल ये मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपकी पार्टी में लोग जानते हैं इनको क्या करेंगे याद करके, तो ये बातें खड़ी हो जाएगी ना। तो भाई लोगों, इट मींस डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू रिप्रेजेंट मी, you are not representing. The question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ठीक है जी, ये वाली बात है। सही। आपका देखें सर, मैं तो आपकी जो माइंडसेट है उसके साथ बिल्कुल चलता हूँ। पर्सनली आई आल्सो बिलीव क्वेश्चंस, इट्स नॉट इवन अ माइंडसेट। हम उनसे भी कभी चुपते वाले सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव सर कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू स्टार्ट विद ग्रास रूट्स। द टॉलरेंस प्रिंसिपल जो हमें नहीं है समझ, कोई किसी को खिलाफ बात करता है तो हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अगेंस्ट है, यू विद मी और नॉट विद मी। ये जो एटीट्यूड है, वी नीड टू चेंज दैट। आपका जो अच्छी एक आपने माहौल पैदा किया है, विच इज द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ डिसेंशंस एंड यू मूव ऑन फास्ट विद द केसेस। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। आई एम आर्ग्यूइंग मे बी contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a council. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है। These are the ballot papers ready. What I'm saying is कि we were ready
for the election if it needed to take place. बताओ आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो, वो तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे, वो उस वक्त करते अकॉर्डिंग टू द पैनल. ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है इज वन पैनल, वन प्रोविंसेस पैनल, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल. ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन. थे नहीं, पैनल कोई आया नहीं, तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ. नहीं, ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल. ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए. अपना मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डिप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है समझ गया. आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो फिर वही कर रहा है. होगा, वो भी 10 लेके आएगा बंदे. नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना. लड़ेगा. वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई. आपने कहा 6 पैनल थे. सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज वन पैनल. फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग. सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का. अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्ने इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी. कोहेजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज कह लें. यस, ठीक है, ओके. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था, वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था. नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को? क्या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100. ये आपके आइन का रूल्स का, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स ऑफ ECP PTPTI. अच्छा, वो कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100. जो उस रूल के मुताबिक चूंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न्ड पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. ये एक रूल 15 हमारा था, तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500 सवा 500 लोग जमा हो गए थे. ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से. कौन से पार्ट में? 101 में होगा, पार्ट 1. ठीक, चल आगे बढ़े. ठीक. सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया. द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be,
but whatever it was held. And it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of But you were not facing arrests. problems in 2021. नहीं, ये We are 21 going back in time. हाँ 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा इलेक्शन करा लेते भाई, अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है। वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक खत उनको, जी हमारे 6 पैनल थे, अनअपोज्ड आ I गए। wish past could be undone, लेकिन अब वो past में तो मैं जान, मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते हैं ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे मेंबरान, मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी, मगर वो आपका एलिगेशन उस तक जा नहीं रहा है कि जी, तो फिर ये बात उसी दिन से कर रहे हैं। मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे जी। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्हें बता भी दिया आपको नताइज कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। So your lordship is, उन्होंने, आपने कहा नहीं जो टाइम दे दो, उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया उन्होंने आपके प्रेसिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी, और कोई वो नहीं दी, पेनल्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं, भी ठीक है। तो अगर ये देखें, कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं। ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं ना, कोई ECP उठाती बात। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अब ये जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है, जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज खान, सईदुल्लाह खान न्याजी, महमूद मिर्जा, फारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबजादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी, ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी आई एग्री, एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, पहले कुछ और था। तो कम से कम ये तो बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। Not for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं, फिर वो तो ने मान लिया तस्लीम। क्या कोई और लेटर है? जो मैंने कॉपी लगाई हमने ये original तस्लीम नहीं की हमारे में। और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट, आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है? ऐसे ही, we don't doubt that. नहीं तो पहले ही दिन अगर ये देखिए, खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें। देखिए आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके, अब बर्डन तो आप पे आ गया ना। वो दिखाएं, या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर, वो तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी। शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब, मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ, ऑफर हुई थी लेकिन शायद हाँ? उनका यही स्टैंड है। आई थिंक सही कह रही हैं। और आप कुछ ना कहें। हाँ, तो ये ऐसी ऑन लाइटर नोट, बुरा ना माने, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं और बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, आवाम में भी बढ़ती है। हर पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा,
یہ ادھر آج یہاں سے ٹکٹ لے لیا, یہاں سے نہیں ملا دوسرے میں چلے گئے. بھائی تو پھر آپ کا کوئی وہ نظریہ کیا ہے, آپ کا اصول کیا رہا؟ تو نام بھی شاید رکھا ہوا ہے نہیں وہ مطلب وہ اس قسم کے لوگوں کے لیے. چلے کوئی اگر پارٹی اس میں ہو نا سرکار میں پھر چھوڑو. تو دیکھیں یہ بھی ہر پارٹی, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا, ہر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ تو سب کھلی کتاب ہے. تو وہ ہر پہ بہت کچھ گزر چکا ہے, تو کچھ نہیں گزرا ہے شاید. تو پارٹیز ایسی نہیں تھیں جو بہت بڑی ہوں, فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سو یہ سیڈ ہسٹری ہے. مگر اگر اگر ہم تھوڑا بھی صحیح کرنے لگے نا تو The best thing that your lordship did was یہ 8 فروری والا الیکشن کا. ابھی انشاءاللہ At least we are going that you way. can take credit for that. No, I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. اور دیکھیں الیکشن آن اینڈ آف آل, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, مطلب who knows what happens tomorrow. I can't say if I'll be alive tomorrow. Correct. I can say inshallah. چلیں. Acha, now so basically sir, coming so I have tried to نہیں یہ بات سمجھ گئے, اگلا پوائنٹ بتائیں. Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3, نہیں تو الیکشن ایکٹ میں تو وہی پروویژنز ہیں دونوں. نہیں 17(3 جو ہے سر of the Constitution, وہ provides کہ source of fund جو ہے, Not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. my jurisdiction is that when you read 17(3, Do they have they have jurisdiction? jurisdiction. Ji, they do. Under, Where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, وہ تو اس read with Section 210. کون تعین کرے گا اس بات کا؟ یہ sir these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme وہ Court. عدالتوں نے کیا ہے نا, مگر اس میں لکھا کچھ نہیں ہے. لکھا ہے سر, تو وہ لکھا آپ کو ملے گا الیکشن ایکٹ ہی میں ملے گا جا کر کے. نہیں لکھا ہے سر, Constitution میں لکھا ہے سر, every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. 2002 To whom? 210 میں. To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? سر یہ لکھا ہے a political party shall, کیونکہ source of funds بنا رہے ہیں نا, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial کہاں year. سے پڑھ رہے ہو؟ To Section 210. نہیں وہ آپ ایکٹ ہی سے پڑھ رہے ہیں نا. جی جی, تو آئین میں تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئین میں نہیں ہے. تو اسی طرح تو پھر آپ کا آرگیومنٹ تو وہی چلے گا ادھر بھی, اگر اس کا بھی پھر اس کا بھی نہیں ہے اس کا جوریسڈکشن, وہ بھی پھر سول کورٹ کے پاس ہے. لیکن یہ آپ تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ جی یہ تو اس لیے کر رہا ہوں سر بیکاز یہ جو ہے جو 210 ہے that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2 کہ آپ کی سورس آف فنڈز ہے, اور اس میں 210 میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹ. دیکھیں جی, یا تو آپ کا آئینی بحث ہو کہ جی انٹر پارٹی الیکشن میں کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ مکس اپ کر رہے ہیں کہ آئین کیا تقاضے ہیں. ہم ابھی جوریسڈکشن کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ آپ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فنڈ صحیح نہیں ہے تو وہ کس جگہ دستک دے گا؟ الیکشن کمیشن جائے گا یا سول کورٹ جائے گا؟ آپ نے کہا الیکشن کمیشن جائے گا. اگر یہ بات ہے تو پھر یہی پاور جو ان کو ایک قانون نے دیا ہے وہی پاور ان کو
الیکشن میٹرز میں الیکشن کے متعلق بھی دیا ہے, تفریق نہیں ہوئی ہے, وہ وہی قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017. تو ایک آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں اور ایک اختیار ان سے آپ ہٹا رہے ہیں. جی تو یہ یا میں تو اس آپ لیے ایک کہہ رہا ہوں پوائنٹ آگے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پار نہیں. because the language of 209 and 210 are different, much different. میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ 210 سے تو آپ عکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں جو کمیشن کو سبمٹ کرنے ہیں, وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس سورس آف فنڈز مسٹ شو. نہیں وہ تو ایک دو الگ چیزیں, دو الگ الیکشن کی اور آئین کی بات. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں پھر. Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. یہ والا لینگویج انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے نہیں استعمال کیا گیا. If your lordship turns to section 139, Turn of election. 139, election disputes, chapter 9. So These are post-election disputes. correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void ہے نہیں ہے, کیا irregularity ہے, پورا ٹرائل کا پروسیس ڈیٹیلڈ دیا ہوا ہے. And if your lordship turns to section 1546, تو اس میں باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ کیا کیا گراؤنڈز ہیں in which election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So پورا 10A کا آرٹیکل 10A کا پروسیس ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے کہ not impliedly, it is very expressly said کہ even general election جس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. ان کے پاس اتنا اختیار ہے وہ آپ کو جھڑ سے نکال کے بھی باہر پھینک سکتے ہیں. سر یہ وہ دوسری جیسے ہے. انہوں نے کیا ہے, ابھی کیا ہے انہوں نے, وہ جو مشرف صاحب نے پارٹی بنائی تھی آل پاکستان مسلم لیگ یا کیا, وہ تو انہوں نے جھڑ سے نکال کے پھینک دیا اس کو. وہ سر 202 جو ہے نا سیکشن, وہ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ انویسٹمنٹ, یعنی کہ اٹ از بفور, اٹ از ناٹ اے پارٹی ان ایگزسٹنس. نہیں, الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹی تو سبسسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے, فیلز ٹو فائل ڈاکیومنٹس. بٹ انڈر سبسیکشن 2 نا سر, 2 دے پڑھ لیتے ہیں. وہ 201, 209, 210 کا وہاں تذکرہ آ رہا ہے. نہیں 2 پڑھ لیتے ہیں سر. The 2 ہے کہ 202 is entitled enlistment of political parties, and it talks about a political party, one پڑھتا ہوں, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. تو 5 talks about this section 2. نہیں جی دیکھیے, وہ تو ہے, وہ تو اس کو انلسٹ ہی نہ کرے. پھر کیا ابھی تک آپ نے پورے نہیں کیے اپنے ریکوائرمنٹ, کہہ رہے کینسل دا انلسٹمنٹ. جی کا مطلب سبسسٹنگ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے. وہ تو اگر دیکھیں آپ کل درخواست دیتے مجھے پولیٹیکل پارٹی بنا دو, ان کے پتہ نہیں 50 ریکوائرمنٹس ہوں گے, وہ آپ پورا نہیں کریں گے, وہ آپ کو دیں گے نہیں, مانیں گے نہیں پولیٹیکل پارٹی. سر اگر میں یہ مان لیا, اگر ہم اس پہ جائیں نا صرف 17 کو مد نظر رکھ کے, تو پھر پولیٹیکل پارٹی کہے کل کو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہو, وہ کہے کہ جی میں نہیں جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس, میں الیکشن ڈائریکٹ لڑتا ہوں بغیر ایز اے پارٹی.
اب یہ کہیں نہیں لکھا آئین میں کہ وہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس, پارٹی بنے گی, پھر وہ الیکشن لڑ سکے گا. یہ لکھا ہے کس جگہ؟ یہ اسی میں سب 200 میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیچوٹ میں لکھا ہے جی, آئین میں نہیں. آئین میں نہیں لکھا. جی, تو وہ کل کو کوئی کہے پتہ نہیں جو بھی پارٹی بنانا چاہے. یہ چیلنج ہوا تھا سر بے نظیر بھٹو کیس میں کہ آپ نے کیوں ہم سے رجسٹر کیوں کرا رہے ہیں, یہ باقاعدہ چیلنج ہوا تھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں, رجسٹریشن آف اے پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ایشو نہیں, ایز لانگ ایز یو ڈونٹ پٹ ریسٹرکشنز ان دا رجسٹریشن. کریکٹ, یہ تھا. ہاں یہ بات صحیح ہے. مطلب جیسے کہ اب لائسنس بھی ہے, کوئی کہ میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں, میں آپ سے بہتر گاڑی چلا سکتا ہوں, میں لائسنس نہیں لوں گا. ہو سکتا ہے اس کی بات بھی صحیح ہو, وہ بہتر چلاتا ہے گاڑی, مگر اس کو پھر بھی لائسنس ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے. اب اس کو انکار اگر وہ کہہ دی مجھے اس کی شکل نہیں پسند ہے, میں نہیں سیکھتا ہوں, وہ فیل کر دے ٹیسٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ, وہ الگ بات ہے. تو دیکھیں وہ یہ ہر جگہ دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. جی, تو یہ اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. نا 202 اگر آپ دیکھیں یہ 5 جو ہم پڑھیں, ایک میں یہی بات کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز کا اختیار ہے, دوسری چیز کا نہیں ہے. 202 کہہ رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نکال باہر پھینک سکتی ہے. جی, لیکن اونلی فار 209 سے, اور اس کی اپیل آئے گی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. اگلا پروویژن پڑھیے. جی, اس کی آئے گی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے سر. تو اگر یہ کرتے ہیں ہم سے کہ یہ کریں, جیسے کیا اگلے دن, اب کل کی بات ہے, وہ عوامی کیا نام ہے, اور پاکستان مسلم لیگ APML والوں ان کو انہوں نے اٹھا بالکل ہی ختم ہی کر دیا, وجود ہی ختم کر دیا. انہوں نے سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیا. نہیں سرٹیفکیٹ کی بات نہیں, پورا اس کا آپ کا وجود نہیں ختم کیا. جی, آپ کا میرا میں وہی دکھاؤں گا ابھی آپ کو. آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرا؟ میں بھی وہی دکھاؤں گا کہ بائی ٹیکنگ اوے the symbol they have actually made me dysfunctional. They've actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. تو وہ they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. Law doesn't allow Or inactions. Law allow نہیں کرتا. Law کہتا ہے سرٹیفکیٹ دے دیا تو آپ کو پھر ہم ٹھیک ہے, آپ کو ہم یو آر ایلیجیبل. سرٹیفکیٹ والا آرگیومنٹ مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. جب مخدوم صاحب بھی کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے ہیں, مجھے دونوں کی بات کچھ مزن نہیں نظر آ رہا ہے. رائٹ. So now I was just I'm referring to. یہ ایسی بات ہے کہ جی وہ لا وکالت کی نہیں, وکالت نہیں کی, مگر میں ایک سرٹیفکیٹ چھاپ دیا ہے. یا ایسی بات ہے, وہ ہمارے جاننے والے آپ کے بھی ہوں گے, ڈگری ہوتی ہے بھائی, نہیں فرق ہوتا ہے, آپ کو جاننا ہوتا ہے, کالج حاصل کرنا ہوتی ہے, کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہوگا نا. تو وہ بس دیکھیں, وہ بھی ٹیکنیکل چل رہے تھے, ہم آپ کو بھی ٹیکنیکل پہ نہیں جانا چاہ رہے. ٹیکنیکل میں آپ پھر زیادہ پھنسیں گے. Avoid it. I think so. I'm avoiding it, sir. That's why I'm only being very legal. So basically, sir, all I'm trying to say is کہ 154 میں, for example, clearly لکھا ہوا ہے کہ 154 section 154, 156. All these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. اس قسم کا section کم از کم in the articles that we have read 208. Your point is taken. It has not been specifically provided. They are saying it is. ٹھیک ہے, whether it's specifically provided, impliedly provided, چلیں ہم بات سمجھ گئے آپ کی. Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is کہ under Article 17, the symbol, اس کی دو پارٹ ہے. Symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. وہ تو پھر پولیٹیکل پارٹی جاتی ہے. جی. So my submission is, your lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir.
So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे जी. नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए जी. अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी. बिकॉज आई हैव हर्ड दिस आर्गुमेंट बिफोर. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे खवातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे. मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा. मैं इस तरह नहीं पहली कह रहा. बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. हाँ, Just नहीं briefly. हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी नहीं, आप ना जाइए. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस कि जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट. नहीं वो वी कांट, दे वोंट टेक इट. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, फिर उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए वो बात अभी तक मैच्योर नहीं हुई है. वो बात होगी मैच्योर on 8th of February when the election results are given. Sir, As an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one If of we your can candidates. find a solution with if we give the solution now, that means we are deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. और दूसरी चीज सर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके जितने you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means your lordship. नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही है बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ. जी. Section 67(3). नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती. क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर. This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of हम the इनसे political जरा arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके से. कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर. कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल वो होगा. आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आपको मुझे नहीं चाहिए. नहीं सर, अगर दे देंगे एक कैंडिडेट तो मैं मखदूम withdraw my साहब को petition. बुलाएं. इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. My lord, there is Are you stopping them from contesting elections? not that only the only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard Any to withdrawal simple of- statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these They can contest elections. they can contest हम elections. The record only करने thing के which is statement being बात कर रहे denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. If PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है. फिर- मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे हैं, हम लड़े इलेक्शन. Election- how will the party fight the election? In the air तो नहीं हो सकता ना सर. क्या? We can't fight election in the air ना सर. इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके किस अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से चले, ये भी सही है. अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो. कोई भी सिंबल. एक सेकेंड, ये पहली बात, आप
कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि हम आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. नहीं, मैं लड़ सकता हूं सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट. I can't fight PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. Sir, this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम विलिंग, आई कैन कंटेस्ट अंडर वन सिंबल, एनी सिंबल, आई एम विलिंग टू विथड्रॉ दिस पिटीशन. They have given the statement that you can contest elections. How, where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ, बट नॉट PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी. कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI. वो सिर्फ असली बात ये है क्या इसका वजूद? सिर्फ मैं ये सवाल हमारे सामने है. PTI जो भी है, एक्स पार्टी कर लें आप. Let's talk about abstract law. एक्स पार्टी, किसी ने जाके कब्जा कर लिया उस पार्टी पे, एक्स पार्टी जो भी है, एक्स पार्टी wants to contest election as a party. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. ये सारी मफरूजों पे हम जा रहे हैं. नहीं सर, नहीं लिखा है. इलेक्शन, आपके नॉमिनेशन पेपर जिसके एक्सेप्ट होगा इलेक्शन लड़ सकता है. सर, बट अंडर व्हाट? एज इंडिपेंडेंट ना सर. नेचुरली, हाँ जी, वही है सारा. बट डजंट मीन अगर वो पार्टी छोड़ दे तो अलग है. सिर्फ वो इंडिपेंडेंट. देखिए ना, अब वो पार्टी छोड़ दे या उसके साथ वाबस्तगी आपका शायद उस पर कंट्रोल खत्म हो जाए, ये हो सकता है. आप कह सकते हैं कि जी अब मेरे पार्टी डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख लिया बराबर में क्या हुआ. सर देखिए, आपने जो पार्टी हेड को खत्म किया इधर, आई थिंक देखें जी, अब अपना जमाना भी याद थोड़ा कर लें जी. एक पार्टी थी, पार्टी हेड गया, आपने सिक्योर कर ली कोई चीज जी जी, और अगले दिन वो साहब कैसा रेजोल्यूशन लिया है जी, क्योंकि वो किसी डिसिप्लिन के ताबे नहीं थे जी. उसका देखा आपने, मगर आप उसके बाद नहीं बात करते हैं उनके मुतालिक बातें. ठीक है, ये अभी आप इसको अपने लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हैं? हमारे पास जो बात है हम उसका तयन. Sir, this is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. समझ नहीं आ रहा है. I don't know. Sir, होगा ये कि let us जाएगा, कैंडिडेट जाएगा कि मैं इस पार्टी का हूँ, सबको पता होगा. नहीं, पता नहीं होगा, सबको पता होगा. वो तो आएगा, एक कैंडिडेट आएगा, let us say MNA आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these things. हर कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा जी, अलग मिलेगा. अच्छा, अब अलग मिलेगा तो लेट्स से कि MNA है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, उसके ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3). आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें. मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है. इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं सर, लेकिन मेरी पिटीशन में तो है ना. नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए. मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई जी? सब कुछ मिलेगा. अच्छा, सॉरी. You need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए. अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है. देखिए ना, so he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत
my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया. तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers Article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships. चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ. So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं. वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है. उसको मजबूत किया सर. नहीं, खत्म करा दिया. खत्म हो गया था. नहीं, आपने तो आप ही की तो पोजीशन थी. मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर. नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की. जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है. सर मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि वोट मैं आज काउंट इस नहीं हो तरफ करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा. नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते. आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ. मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ. वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे, वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी. निकालें वो केस, वो आप ही देखें. वो आपके खिलाफ जाएगी बात. आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ. तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस, वही होगा. मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है. बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है. पार्टी cannot contest the election. ये मैं कह रहा हूँ. इधर आए. And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट. नहीं, आपको दिया. I understand. आप निकालिए केस. उनको तो नहीं देने को कहा है. जी, मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट. पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन डेवलप्ड रोबस्टली by our courts. और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case. Your lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case. And your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है, it does not just mean form a political party but function and operate as a political party. That is also a fundamental right, to function and operate as a political party. Now your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734, or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being stressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416.
PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स ECP can vet them of a political party. तो बेनज़ीर भुट्टो शाहिदशी challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 Supreme Court के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनज़ीर भुट्टो ने जी. एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें, यानी पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, मगर जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं तो अभी आपको आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. हाँ, इफ योर लॉर्डशिप look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? थोड़ा सा स्पीड कर दें जी. स्लो डाउन हो गया जी. Your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? जी, Why are you telling us this? I am telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. आप सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन. कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज. अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा. आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं. मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है. वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे, वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया. बस वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं. मेरी ये उन्होंने
آرگیومنٹ مگر ان کا تو جہاں سے بات ساری شروع ہو رہی ہے وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن ہو گیا, وقت ہو گیا, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا سمبل لے لیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں الیکشن نہیں کراؤں گا مگر سمبل برقرار رکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو ایکسٹریم سٹیپ ہے سمبل لینے والی جو انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے, قانون اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا. کرا رہے ہیں یہ کرایا سر, کرایا انہوں نے, میں دکھایا. دیکھیے ان کی جو انگزائٹی تھی الیکشن, وہ کہہ رہے تھے بھائی الیکشن کرا لیں ختم. سر وہ تو دیکھیں, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے آپ کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. میں نے الیکشن کرایا, وہ نہیں مان رہے. کدھر اس الیکشن کرایا آپ نے؟ وہ آپ کو I showed the documents to your lordship کہ this is what I have. پہلا والا جو کس تاریخ کا مئی جو میں کر رہے تھے, اپنی گورنمنٹ تھی, وہ کب آیا تھا لیٹر وہ؟ مئی میں. سر وہ تو انہوں نے اس کو قلعدم قرار دے دیا. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے نا, وہ اسی کی کڑی چل رہی ہے ابھی تک. کڑی نہیں, ابھی تو اس وقت we are talking about the last election جس کے اوپر انہوں نے وائلیشن کا سمبل دیا. اب تو وہ کہیں گے نا اب تو ہم نے سر پکڑ لیا. سر بٹ سر پکڑنے کے لیے بھی they need the law. اب جب یہ جو ریسٹرکشن ہے سمبل والی, دیکھیں پھر آپ بحث کیجئے کہ ہم الیکشن نہ کریں یا کریں, ہماری مرضی, آپ مت ہمیں انٹرفیئر کرو. پھر بھی ہم نے الیکشن سمبل کے اختیار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمبل is part of my fundamental right. It cannot be taken away through an implied. دیکھیے کل بھی وہ مخدوم صاحب کی ہمیں بات یہ ہم لوگ سوال ان سے کر رہے تھے کہ جی ایک دفعہ الیکشن ہو گیا پھر باقی چیزیں فورن پلیس کرتی ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دیا نہیں دیا, دیر سے دیا وغیرہ, سمبل, یہ سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو, میں دکھا دیا آپ. مگر بنیادی بات پہ آپ چلے جائیں الیکشن والی بات. الیکشن ہو گیا سر, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اس میں irregularity تھی کہ نہیں وہ ڈیبیٹیبل ہے. اس کو اگر ہم الیکشن ہو گیا کی بات آپ کر رہے ہیں یہی تو الیکشن میں نے کرا دیا. Now question is, نہیں دیکھیے اس پہ ہماری دو رائے نہیں ہے. وی اگری ود دیز ججمنٹس, ہم جانتے ہیں ججمنٹس. these are important. اس میں why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide کہ آپ سمبل لے لیں, can it be interpreted in that way? کیونکہ آپ ایک سینیریو دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلیں اس کے 2 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ ووٹرز یا سپورٹرز ہیں. اب ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے نامینیشن فارم نہیں ملے, اور اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پوری پولیٹیکل پارٹی کو میں سمبل سے ہٹا دیتا ہوں, اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیتا. تو ان ایفیکٹ امپیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ 9 کروڑ لوگوں پہ, کیونکہ وہ 9 کروڑ لوگ جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی آرگومنٹ کو الٹا کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں ملا, 13 لوگوں کو بھی نہیں ملا, ایک نامینیشن پیپر دکھا دیں, ایک 50,000 کی جو فیس ہے وہ دکھا دی جمع ہوئی, یہ الیکشن بوگس الیکشن تھا, الیکشن ہوا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے 9 کروڑ لوگوں پہ قبضہ کر لیا. وہ یہ آرگومنٹ تو میری بحث نہیں ہے نا, آئینی قانونی آرگومنٹ از اونلی اور آرٹیکل 17. تو یہ وہ بھی کریں گے بات, یہ آپ بھی کریں گے. ہاں میری آرگومنٹ از آن آرٹیکل 17 سر. جی میری سبمیشن یہ ہے, سمجھ گئے آپ کی بات. کوئی نیا پوائنٹ بتائیں نا اگلا. So یہ point ہم سمجھ گئے. We've taken it on board. You've relied upon Benazir Bhutto case. It deals with this matter comprehensively. Correct. And اس میں خالی 2-3 چیزیں پڑھنے والی ہیں سر کہ political parties get their store by their reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not their case may be me. ان کو enmity میرے ساتھ اگر ہے, we are actually defranchising. آپ خود الیکشن نہیں کرا رہے ہو, پھر آپ الیکشن سمبل کیسے مانگ رہے ہو؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے بڑی ایک خوبصورت ججمنٹ دی. A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. آپ نے کہا کہ ایک سنگل بندے کا کنٹیسٹ کرنے کا الیکشن کا جو رائٹ ہے, سنگل مین, اس کی رائٹ کی ناٹ بی ٹیکن اوے. اینڈ آرٹیکل 62(1)(f) آپ نے کہا کہ وہ 62(1)(f) جو ہے وہ آرٹیکل 17 کے خلاف. ہم اس طرح کریں گے, اس کو انٹرپریٹ اس طرح کریں گے کہ اٹ از نان ایکسیکیوٹری. Now that's a very positive. میرا ججمنٹ نہیں ہو سکتا جس میں میں نے نان ایسٹ استعمال کیا ہو. نہیں, نان ایسٹی سے نان ایکسیکیوٹری.
It cannot be executed. मेरा जजमेंट था। अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो आपने अच्छा अच्छा वो वाला 62(1)(f). ओके ओके ठीक है जी। अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया। हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात। ओके ओके मैं समझा कोई और जजमेंट जी। तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल एक बंदे के लिए भी। तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI और जस्ट बिकॉज दे वांट टू कीप। You've withdrawn the allegation of malafide. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है। यू हैव टू गिव द सिंबल। और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है। अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें। Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, जी, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366, जी sir, you wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं। उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें। उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not, I don't know. You are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं sir. Historical नहीं है, तो आज की तारीख है, ये कोई पुरानी तारीख नहीं है। Correct. देखिए ना ये जो ये आप ये जो बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल प्ले। अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है। मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई। अब एक तो वो हम क्या करें, उसका हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से। इनका कहना ही होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं देखता रहूं जी। तो एक तो ही होगा। देखिए अब मैंने देखिए पूरी बात कर लूं,
धरना केस में इन्होंने आके मौक़िफ़ लिया, कॉस्मेटिक है कानून, जो बात आज आप कर रहे हैं आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया। हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं, इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली, आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में। अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं। देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन करा, तो नहीं कराएंगे। फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व। देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे किया सदर ने ऑन दी एडवाइस। मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। तो ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स, यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड, यू कांट कीप शिफ्टिंग। भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, सिर्फ हमें शायद हम बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम whatever the situation। और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स। एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. That you should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should मेरे always पास be... भी एब्सोल्यूट पावर था, मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए। I was surprised. तो एब्सोल्यूट देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अब मेरा मौका आ गया है, but your lordship। चलिए खैर कोई, अब आगे बढ़ते हैं जी। So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 73. और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी। और इस जजमेंट में, this is Nawaz Sharif judgment, so almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and have some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate judgment है, जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights, and वो कॉन्सेप्ट लेके आए from the preamble of the constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17। और political justice का preamble में जिक्र किया। So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618, and political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17.
My third ground, Your Lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to two judgments. Mohammed Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वार्ड वाला केस। हाँ जी, बिल्कुल। डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ। नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे। पावर दिए हैं, अब वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आपने किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सिर्फ वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी। तो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। No, I'm not. This is the second, third point, sir. ये 200 This is now a very important point for me. It says what my point is this. टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। So that is for not giving a document. का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को। फिर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं। चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी side वाली A court of law can be abolished by law. जी. A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this, कि the intra-party election is a civil आर्टिकल dispute. 219 कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें पावर डेलीगेट होते हैं, such other functions as may be specified by an act of मजलिस शूरा पार्लियामेंट। जी, ये आपने पढ़ लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो। सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है, अंडर आर्टिकल 175 है। I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है। ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है। तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ। नीचे नहीं आएगा, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी jurisdiction में they are kings. Let's put it that way. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं। मतलब कोई चीज एक्ट ECP के पावर कम नहीं कर सकता है। to the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता। हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी jurisdiction को हो सकती है मतलब नीचे। बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं। Correct. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी। देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बाय लॉ आप ECP को नहीं छू सकते हैं। करेक्ट, लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा
تو ایک پلینری جورسڈکشن ہے آف دا سول کورٹس کہ جو سول ڈسپیوٹس ہیں دے ول گو دیئر. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ہم اسپیسیفائی. نے اگلے دن بہت وقت نکالا اس پہ پلینری جورسڈکشن آن ڈسکوالیفیکیشن 62(1)(f) کا. بھئی ہم سوچ رہے تھے کورٹ آف لا سے مراد کیا ہے. بہت ہم نے لمبے چوڑے اس پہ بحث سن چکے ہیں. صحیح. تو وہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. So I'll be very short on that. My point is this only کہ dispute. اور صاحب that is all right. ہم نے ان کو کہا تھا اٹارنی جنرل کو ٹھیک ہے سب کچھ ہے نہیں. Your Honor, there were یس نو 4 ڈالوں میں لوگ آئے نکاح پوچھتے. ابھی میرے گھر سچویشن کیا ہے. اٹس اے ویری سیریس. جب وہ ابھی آپ چودھری صاحب کو بلائیں. چودھری صاحب Your Honor, ہمیں یہاں نہیں کرنا ہے. پلیز گو اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ رائٹ ناؤ. اور صاحب نہیں آپ یہاں نہ بات کریں. جی کیا My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. میں جیسے ہی کوئی انفارمیشن ملتی ہے وہ they are finding out کہ کیا ہوا کیا ہے. whatever it is وہ ابھی آ کے تو میں پھر بتاتا ہوں جی کورٹ کو. نہیں we want it fixed. My lord, We want it fixed. my lord, it will be. غور صاحب if you want to accompany him you can go. Your Honor, میں صرف We are hearing this case. نہیں دیکھیے نا پھر آپ یہ آپ Your Honor, اگر میں آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا اس کوٹ کا بھائی وکیل ہوں ابھی تو ہم کس نے کے کہا نا سامنے if they don't Your fix Honor, it then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. آپ میری بات علی ظفر صاحب Your Honor, صرف آپ پلیز دیکھیے وہ we don't want to detract. Your Honor, میں صرف یہ عرض کر please. رہا ہوں. fair trial کو which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members में let us say dispute भी हो जाए, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And is case mein koi proper trial hui bhi nahi. Ye to summary matter mein, summary proceedings mein court ne, election commission ne faisla kar diya. They just decided their hearing ہوئی, questions پوچھے اور نے کہا جی we are not satisfied with your appointments. اگر ایسی بات تھی تو ٹھیک ہے ہمیں بھی ایویڈنس لانے دیں, ان کو بھی لانے دیں, and ایک proper trial کریں if they have the jurisdiction, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, کم از کم مجھے اتنا بڑی پینلٹی دے رہے ہیں, مجھے پھر آپ پروف کرنے دیں کہ میں نے یہ کیا ہے الیکشن یا نہیں کیا. Can't be done on just one person standing up and saying جی میں نامینیشن پیپر لینے آیا تھا مجھے نہیں ملے, جبکہ اس نے پینل بھی نہیں لے کے آیا کوئی بندہ. جی سر, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe
a lot of judgments have come by now and the law is very हमें well ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटिशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी वो एक और पिटिशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चले गए ये इसका जवाब देते जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी ये सवाल पूछा हाँ जी सर इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी आईसीए हुई दैट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई और एनी ऑफ द पीपल हियर वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को आप मानते हैं तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं वो आपके गुजरांवाला के सदर है जी होगा सर नहीं होगा बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो पीटीआई मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी इंडिविजुअल ने फाइल की पीटीआई की नहीं है ये बात डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं वो तो उसने लिखा है तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटिशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया वो तो पीटीआई लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा था मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब जस्टिस जवाद हसन साहब उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है वो तो कहा उन्होंने आपने नहीं वो जो भी पिटिशनर था लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस तो आई डोंट वांट टू मगर उन्होंने ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया वो ठीक है उनको देखें ये एक चीज करना चाहिए थी दूसरी ठीक है तो उन्होंने दोनों चीजें कर दी बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए मगर वो दूसरी जो 2 पिटिशन है उसकी बात जो पहला ऑर्डर था जो पहला ऑर्डर पास किया था वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करार दे दिया उन्होंने जी हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी वही लिस्ट वही इशू ऑफ पेशावर कैसे ले गए ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पेशावर वो लिस्ट नहीं लेके गए दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन सेकंड इलेक्शन तो ECP ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर कोई कमी नहीं थी कोई कमी नहीं है बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस इसमें क्या गलती लगाई हमने वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा ना व्हाई बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, एक तो पेशावर में था और 3 of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के. So अगर बलुचिस्तान के होते तो आप बलुचिस्तान चले जाते. I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन जब इलेक्शन कमीशन के बाद वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी it was. और बल्कि आपके आई थिंक ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद
it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases, लेकिन हुआ ये कि वो bench खुद ही discharge हो गया. So it was pending not तो है ना? Pending है. We intend to withdraw that because it has become infructuous. But that जब लगता है तो we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक But they're just telling you, according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention. ICA में था. नहीं वो the other case, not this one. नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं. ये WP वो I think I don't know why. नंबर बताता हूँ आपको. 8117120023, which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned इसमें क्या friend, issue है? आप थे, आप इसमें मैं इसमें हूँ जी. If my learned friend नहीं, इसमें क्या issue क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी. अब WP 1171 का बताइए. एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप चूंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन. जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी. और एक है सर 3-4 है ना. एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं. वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर. हाँ, वो बात, वो आइडेंटिकल नहीं है इसके. दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो चेन की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Makhdoom Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लगाई नहीं है शायद नंबर देखो. आगे सर, अब आ गया जी क्वेश्चन. So I will leave I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में है. But if that's been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. He's not conceding. He's contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the थी कि नहीं थी, independent of the independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं. So my submission is this. On that point, I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका.
Sir, I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे. फिर हमें वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का, या तो आप अबैंडन करें या हमें कोई पेज बताएं, अब पूरा हम जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि 2 कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी. जी. How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाए. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें. मैं आपको रेलेवेंट है मैं बोलूंगा. बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498. ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है का जजमेंट. जी इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड 1 लाइन. ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना. जी वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए. मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not. आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटिव लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं. इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए. मैं ये कह रहा हूँ सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए because I think maybe I'm not that clear. My proposition is if there are 2 concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं. ठीक. To me each high court is a supreme court of that province. ठीक. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number 2, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say Suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी. अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी. उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ. ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल. वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं. सर बिल्कुल सही. अगर तो एक हो सकता है कि 2 अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है. लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम cause of action. It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election.
Election is the cause of नहीं action. सर, इलेक्शन तो इस तरह हर इलेक्शन होता है सर. इफ आई एम सपोजिंग मेरे नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं रिजेक्ट, सेम नॉमिनेशन पेपर ऑन द सेम ग्राउंड हैव बीन रिजेक्टेड इन मियांवाली और इन इस्लामाबाद और इन लाहौर, आई विल फाइल 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in But three you can't go to judgments. Peshawar from Supposing I'm Pushab से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो Right? उधर जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ कि territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं. Sir, या उनका एलिगेशन होता कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है. मगर अगर सपोज ECP कल आपको नोटिस दी, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहाँ के लोग खुश नहीं, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर. Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Then the party है sir उस केस में पेशावर वाले. यही तो इशू है. He's a party in the Peshawar High begs Court. the question. He chooses to file in Peshawar that in begs respect of the he election can't that say, I was am the challenged. party. जी. Après vous, क्या है फ्रेंच में क्या? Après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. चलिए खैर आपने ये बात हम समझ गए, मगर उनका ऑब्जेक्शन ये था. चलिए मैं समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक. Ji. Now, sir, moving on. 645 पे. जी, 645. नहीं हम अपना काम करें, आप बताएं. जी, बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था सर, I can multitask. I know. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है. जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है. पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है. नहीं वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे. नहीं, आप तो हैं ना सर, आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर it will be misjoinder because they were part of the second order. चलें. So ये तो I think is a very I mean I am देखिए very ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे. जी. उसकी पार्टी कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान. Simple. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता. या तो say he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो. हम लिस्ट पे जाएंगे. चलें ठीक है. तो लिस्ट पे Versus election commission. वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें, आपके पार्टीज आर डिफरेंट. जी. So we have to see if the same issues raised. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं declaration with regard to their order इलेक्शन कमीशन का 23/11/2023 वाला. आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है? पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ. हाँ तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चर्स हो गई. आपने कहा नहीं. जी मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सेड कि इसको मैं आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चर्स हो गई है. फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी. देखिए आप ये सुन लेते हैं 657 पे.
when confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Learned बाकी रेलेवेंट नहीं है, तो ये तो आपकी अपनी इस्तदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया, वही इलेक्शन का इशू है, फिर आप चले गए पेशावर। तो मैं देखें सर, मैं कौन गया पेशावर? Because Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये। अच्छा, और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं। I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते ना, लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं ये बताएं। लाहौर के पास जुरिसडिक्शन सर मेरे लिहाज से बिल्कुल थी, तो फिर वहीं रहते ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी। हाँ, कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी। नहीं, वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन, ये बात सर, ये मुझे देखिए ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं। एक जब आप चले गए उधर, Nobody can force me to go anywhere that we I agree want. with you. Yes. But So it's I am not going to. pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was Let's entitled to go to suppose Peshawar. your petition tomorrow, Ji. the Lahore High Court 5 judges say Ji. that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन। नहीं, अब तो सर देखें, नहीं देखिए ना, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन If I persist, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला if I persist with the case and आप this पे thing नहीं है, happens, अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। तो उसमें देखिए, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया जी। कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ECP ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सब के मुताबिक था, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा, वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की, खुद इलेक्शन सही हो गया, तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे। या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकेंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें? आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो साहब फरमा रहे हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशंस ऑर्डर इज सेट असाइड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। I will not be at all. That would be very great. question of law. जी, so that is why I'm saying that that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we've challenged. It says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view. नहीं, we've challenged it. नहीं तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया। नया बना दिया सर, because of that. So I mean question में समझ नहीं आई। नहीं तो फिर क्या, तो चेयरमैन तो ये हो गए, वो नहीं रहे, अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी। फिर So that is what I'm saying कि आपने बताया था ना कि ये आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म। गौर साहब कह सकते हैं, लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हम कहेंगे नहीं, from what I know। नहीं देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, लोगों का कुछ पता नहीं होता है, आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का। बहुत से कम लोग ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ। सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से, तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा, इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं, एक और वो नहीं हटेंगे, वो कहते हैं कि मैं नहीं। चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है, पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल, यू कांट हैव री इलेक्शन फॉर अ पैनल। तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा। दैट्स राइट।
If he doesn't, If he doesn't, then he doesn't. okay. چلے. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 कितनी बोले आप? political parties, 175 almost. And out of them, not a single one के intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना इसलिए चलें आप ये कह सकते نہیں हैं بروب کی بات نہیں ہے, آپ نے الیکشن کرائے ہی نہیں ہے. دکھائیں اس کا ججمنٹ. یہی تو بات ان کی ہے کہ کرا لیں الیکشن بھائی. پروب وہ نہیں کریں گے, آپ کرا لیں جس طریقے سے بھی کرانا ہے کرا کے ختم کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سر کیوں نہیں ہے یہ. آپ چلیں کہہ رہے ہیں, بٹ میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے کیا. الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک پریسیڈنٹ ہے. ہمایوں اختر صاحب کے کیس میں الیکشن کمیشن ڈزنٹ مین کہ الیکشن کمیشن کا آج ایک چیئرمین چینج ہو جائے تو وہ الیکشن کمیشن چینج ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن از اے کنٹینیوس اینٹی. ان کا ایک اپنا سے ججمنٹ ہے جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ڈسپیوٹ واز براٹ ٹو دا الیکشن کمیشن. یہ کون سے لا کے آپ تحت؟ کو بڑا انٹرسٹنگ یہ فیکٹ میں بتانے لگا ہوں. روپا کے تحت, پرانے لا کے تحت. چلیں وہ آپ نہیں مجھے بتا ابھی. that is not the issue. نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کون سا ججمنٹ ہے, بتائیں نا. وہ رپورٹر یہ آپ 853 پہ آ جائیں سر. کون سی بات؟ ہاں اسی پیپر بک میں ان کی پیج میں لگایا پیپر بک میں. میں نے ہائی کورٹ کے سامنے لکھا تھا تو ہمیں آپ نے کچھ نہیں دی ہے بک. میں ابھی 853 میں تھوڑی دیر پڑھ دوں جتنی دیر میں آ رہا تھا. جی جی بتا دیجیے. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. جی توجہ. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. کب کا آرڈر ہے یہ؟ This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political روپا party. کے پروویژنز کون سے تھے جو اس وقت موجود تھے جو اب نہیں ہیں 2017 کے ایکٹ؟ کوئی چینج نہیں اس میں. چینج تو 215 وغیرہ میں تو بلکہ پروسیجر ڈال دیا نا انہوں نے. یہ تو آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں. بلکہ جب یہ کیس آیا الیکشن کا ہے جی کوئی بتائیں. پولیٹیکل پارٹیز سو یہ کس نے فائل کی تھی پٹیشن؟ یہ ہمایوں اختر یہ کس پارٹی میں؟ اس وقت پی ایم ایل جی پاکستان مسلم لیگ. اس وقت کیا بدل گئی ہے؟ اب تو کسی اور پارٹی میں جی. پروبلم پارٹی کے اب شاید اب وہ سپلٹ ہو گئی پھر پارٹیز اس کے بعد. سو یہ تو ایک اس کا کمشنر کا آرڈر ہے. سر کمیشن از آنریبل چیف الیکشن کمشنر. نہیں تو اس کو کوئی نوٹس شوٹس کچھ نہیں ہوا تھا اس میں؟ سر سارے پارٹیز ہیں, آرگومنٹس ہوئی. وسیم سجاد صاحب ایک طرف سے پیش ہوئے. سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کیا ایشو تھا ان کے سامنے. پڑھ دیتا ہوں. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another
filed by Mr. Muntaz Akhdas Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and abrogative acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है, कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया. एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड. नहीं, मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त. ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये जी. पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है. देख लें जरा प्लीज उसमें. जी जी इसके तहत हुआ जी उसके तहत. इट इज चलिए खैर, आई कांट फॉलो दिस. जी. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, ये नहीं कहा. उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है. यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए. तो जरा सा ये फर्क हो गया. जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए, नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया. ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए. थोड़ा ये भी वही है सर. हाँ, ये भी आपस में झगड़े. मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए. उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान Are you saying कि whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ आ गया. यहाँ तो वो भी नहीं वो है. कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है. ये आई वॉश है. पहली बात तो ये है कंटेंशन है. पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है. देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट. वो कोई एविडेंस लेके आए, But would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. I have No, देखिए ना, nor can they establish elections were not held. जी. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say no. This is elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटीशन ने ये नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए. उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन. बारीकियों में चले गए. तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है. हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग अफसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स पे बैठे रहे, भी कोई आया नहीं. बट यू नो, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. Your Lordship, next point. Where's the attorney? नहीं कुछ ना क्या, attorney general is here. My lord, he is here, but he's not in uniform. एक second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ठीक? जी. Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं. मिस्टर उमर अयूब इज नॉट अ पार्टी सेक्रेटरी. मिस्टर असद उमर जो हैं सर, वो एक्चुअली ही वाज डिटेन्ड, एंड आफ्टर हिज डिटेंशन ही केम आउट and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why?
he didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said, I can't continue. He does disclose in the document that you filed. جی کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے، اوکے. So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kiya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan Did he resign as a member of the party, the office holder of the party? نہیں, he as an office holder. بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now. But so the point being, He was the star of your party. جی Star تھے نا. yes, he was, I think. And I mean, جو بھی ان کو مجبوری ہوگی, I don't want to go into ان that. کی مجبوری نہیں, انہیں واضح طور پہ لکھ دیا کیوں میں ریزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو آپ نے ڈاکومنٹ فائل کیا, unless this document is not correct. نہیں, it is, ہاں, it is correct. That is پھر the انہوں نے تو document. ریزن دیا ہے. جی انہوں نے ریزن بتا دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. Following the events of May 9th. انہوں نے اپنا ریزن دے کے وہ چلے گئے. بٹ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز are very a valuable asset of the nation. جی تو ان کو ہم ڈسفنکشنل نہیں کر سکتے سر, جسٹ بائی. Why should the others leave and he stay? ہم دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں. جی Why should the others leave and he stay? ہی مینس اٹ. کیا نام ان کا؟ اسد عمر. اسد عمر. اسد عمر. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. Stayed there. But he opted out. He opted out. اب یہ سارے مسئلے آپ ہی کی پارٹی میں کیوں ہو رہے ہیں؟ سر بیکاز آپ دیکھیں, جو ہسٹری دیکھیں, پہلے باقی پارٹی سے کچھ نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا کہ جا کے کرو یا نہ کرو. کون سی چوزن پارٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے مخالفین نے کچھ کیا ہوتا تو سمجھ آتا ہے. یہ تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے مخالفین تو آپ کو نہیں کہہ رہے نہ کرو. ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں, الیکشن کرائے خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے کھڑے کر رہے. پھر یہ بھی بات مخالفین آپ کو کچھ مطلب elections کرائے سے. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 آپ کو میرے سے بہت کیا ہے. Article 17 کے تحت it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional اگر ہو جائے گی just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate election. So میں اب صرف sum up کر رہا ہوں. So my therefore request would be کہ also the interpretation sought کہ آپ اس کو ہمیں ٹائٹل رائٹ دے دیں اور ٹرائل کورٹ, دیٹ آلسو از ناٹ پاسبل. اگر ٹرائل کورٹ بننا ہی ہے تو پھر پوری طرح آرٹیکل 10A کو آپ فالو کریں and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. یہ الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenged like this. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرا کمپلین نہیں کیا, لیکن یہاں تو آلموسٹ سو موٹو کیا. ڈسکریمنیشن 13 پارٹیز کو نے یہی ایکشن لیا, ان کے بھی خلاف نہیں کیا سر. اور اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں جس سے آغاز کیا, اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سب پارٹیز کو نوٹس دے رہے ہیں. سر پڑھ لیتے ہیں سر. 21 مئی کی جو نوٹس ہے پڑھ لیتے ہیں. اس میں پڑھی, اس میں میں نے کہیں جی میں نے پڑھا تھا, جی میں نے پڑھا, وہ کھولے ہیں ان کا. اس میں سر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایلیگیشن یہ نہیں ہے
کہ ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کی irregularities کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ us differentiate for a minute. نہیں آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں نا الیکشن کیا ہوا؟ نوٹس نکالیں جی 21 مئی کی کہاں گئی نوٹس؟ اگر 21 مئی کی نوٹس پڑھ لیتے ہیں نا. مئی کا نوٹس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا سکھ کیا نے پیج تھا بتائیں محبوب صاحب. 398 پہ شاید پیج پیج 398 ہے میرا خیال ہے 398. 21 میں 2022 فائنل نوٹس فار کنڈکٹ آف انٹر پارٹی نہیں سر وہ بات کر رہے ہیں آئی تھنک جو نوٹسز باقی پارٹیز کو دیے ہیں میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. جو I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title دیتے ہیں Discrimination کی بات کر رہا ہوں میں. conduct of intra party elections. جی ٹھیک ہے. Attention is drawn so and so 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 conduct. سر اگر نہ کروں میں لیٹ می پٹ اٹ دس وے میں نہ نہیں کروں اگر الیکشن تو پھر تو مجھے آپ پوچھ لیں کہ جی الیکشن آپ نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا. بٹ اگر میں کرتا ہوں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں دیٹ از ویئر مائی پرابلم وہ از. آپ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں اگر وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable lord leadership will realize what I'm saying in terms of the fact کہ میں نے نہ کی ایک ہے میں نے الیکشن کیا ہی نہیں سرے سے اور میں دھن دھناتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے الیکشن نہیں کرانا. چلیں اس سینس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں. آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کرایا. بٹ میں نے کرا لیا. آپ کہتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہوئی یہ غلطیاں ہوئی 2 3 4 10. یہ کہاں سے پاور آ رہی ہے میڈم ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ یہ غلطیوں میں اس طرح پروب کرے جس طرح کہ الیکشن ٹریبیونل دیا ہوا الیکشن ایکٹ میں. دس از ویئر آئی تھنک دا انٹائر کیس فالز ڈاؤن. اب لاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں سر ججمنٹ آف دا آنریبل ہائی کورٹ جو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ججمنٹ اینڈ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. آنریبل ہائی کورٹ پشاور نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا غلط ہوا اچھا ہوا برا ہوا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جوریسڈکشن تھی کہ نہیں. پھر یہ کون چیک کرے گا؟ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں سر. So Who will check these irregularities? اگر کچھ ہوتی ہے تو کہاں جائیں گے؟ سول کورٹ میں. وہی جو الیکشن کمیشن خود کہہ رہے ہیں اپنے آرڈر میں اس نے کہا ہے کہ آپ جائیں سول کورٹ میں. یہ ممبرز کا ایشو ہے ہمیں کیوں ہر پارٹی کا انوالو کر رہے ہیں ورنہ ہوگا کیا جی کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی. پرانے آرڈر کی بات کریں 2009 میں جواب دے دوں 175 پولیٹیکل پارٹیز میں ہر روز جھگڑے ہوں گے. ہر روز وہ الیکشن کمیشن میں آئیں گے. ایک کلیم کرے گا جی میرا یہ ووٹ نہیں ہوا میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ تو ایک سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی. چلیے ظفر صاحب ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹیلنگ کس کو کتنے ووٹ پڑے فلاں فلاں. آپ کل کو کہہ دیں جی گور صاحب کو 1 لاکھ پڑے ووٹ ٹھیک ہے بابر صاحب کو 10,000 پڑے. یہ تو چلیں آپ کی بات مان لی الیکشن کمشنر نے سرٹیفائی کر دیا. مگر یہاں ذرا سا تھوڑا سا کیس فرق ہے. ان کا کہنا ہے الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے. جو جس کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں یہ بیسک تقاضے پورا نہیں کر رہے الیکشنز کے. یہ فرق ہے. نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہے کہ جی نام اپنا اگر یہ کہہ رہے ہوتے شناختی کارڈ نمبر غلط ہو گیا. یہ لارڈشپ چلیں اگر یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہوتی تو پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ بحث کرتا. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہی. الیکشن کمیشن تو کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن کرا لیے لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹس غلط ہیں. تو یہ بہت اب ہائی کورٹ نے کہا ہے ایبزرو پروویژن آف لا. اب یہ اگر آپ کہیں نہ وائریز آپ کے سامنے ہے نہ آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. پیراگراف 25 انٹرپریٹیشن از ابسرڈ. I still insist. پیج بھی 25 I will start reading. پیرا بھی 25 ہے اور یہ کنکلوژن ہے. میں پیرا 10 سے شروع کرتا ہوں سر. The petitioners have questioned the impugned para 10 page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found 100%.
We agree with this. یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے بات. Doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with that. میں نہیں کر سکتا. پھر کر دیا آگے جا کے. نہیں, I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that آپ وہ انٹرپریٹ کریں گے کلوز کی, میں اپنی پرسنل آپ کو اوپینین دوں, آپ کی پٹیشن کہاں تھی؟ آپ وہ اس طرح انٹرپریٹ کریں گے اس کو جو کہ آرٹیکل 17 کے کانسوننس میں ہے. اینڈ یور لارڈشپ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی اے سمبل ٹو اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ ڈس فنکشنل ہو جائے. Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 پڑھ دوں جی آپ. Jurisdiction of this court and maintainability, یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید. I will leave ہم نے that. پڑھ تو لیا ہے, اگر آپ کوئی خاص بات بتانا چاہیں بتا دیں. نہیں, اس میں چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں سر. جی, اب ہم آ جاتے ہیں ایک چیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی جو آپ نے جس کی پیج 14. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ہوئے آپ کے, وہ کہاں کہا انہوں نے آرڈر میں؟ کوئی ڈیل ہی نہیں ہوا ہے نا, وہ ایسپیکٹ ہی ڈیل نہیں ہے آرڈر میں کہ وہ آپ کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ this is a quorum, this is a beyond jurisdiction void order. And I still say کہ it is a void order. So الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ میری انٹر پارٹی الیکشنز کو دیکھے. Now let us look at 15 para. Before embarking آپ کو اگر یہ پاور ہی نہیں تو آپ کو اپنی پٹیشن میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی, آپ الیکشن میرے ہو گئے پھر نہ بات کرتے, وہ سمبل نہیں دے رہے تھے. نہیں تو آپ سمبل بات کرتے نا کہ مجھے سمبل چاہیے. ہم نے نہیں کہا اینڈ میں. آپ پڑھیے اپنی الیکشن, آپ کی پٹیشن پیج 33 پہ آئیے. میں ذرا یہ پڑھ لوں آرڈر سے, پھر میں آتا ہوں. ایک سیکنڈ, یہ پڑھ رہے ہیں چونکہ I don't want to leave it in between. Let me finish this. کون سا پیراگراف آپ پڑھ رہے ہیں؟ Paragraph 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 पे आ जाते हैं, ठीक है. 18 पे. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. یہ آپ دوبارہ پڑھیے, یہ جو آپ نے بھی پڑھا نا, بالکل یہی کہہ رہی ہے. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. ہاں, اگلا جملہ آپ نے پڑھا. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. وہ برج کی بات نہیں وہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کے الیکشن ایکٹ کے تحت جو ایکسپریسلی لکھا ہے وہ کر رہے ہیں. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction. آپ ہمیں بتا دیں jurisdiction نے لکھا ہے کہ سول کورٹ کا ہے. جی میں پڑھ رہا ہوں سر. نہیں بتا دینا کہاں لکھا ہے. نہیں, آپ پورا پیراگراف پڑھ لیجیے نا. جی پڑھ رہا ہوں سر. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself
jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. या म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके, वो आप कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन फैक्ट है तो अथॉरिटी कर सकता है If it वहाँ exists. के। तो इफ इट इज तो उन्होंने आपको शो कॉज दे के एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर। सर वो तो अगर अब नहीं, मैं सिर्फ जजमेंट की, अब देखें जजमेंट के अंदर Judgment मुख्तलिफ बिल्कुल ठीक कह रही है, पैराग्राफ हैं जो आपस में कॉन्ट्ररी हैं टू द It is not. फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस। with respect it is not. डिस्ट्रक्टिव है वो। With respect, एक तरफ it is तो not, कह रहे sir. कर नहीं सकते, कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं। I think the honorable judges of Existence the- of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power। I think what the honorable judges are saying, आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह मतलब रहे देखिए, हैं। आप ये Once the बता- authority has jurisdiction in the matter on existence of ये तो jurisdictional जनरल fact, बातें हो रही है ना, कोई it can specific decide the fact in issue or adjudicatory fact. अब यहाँ A पे wrong मान लिया- decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided ये तो और essentially. आपके अगेंस्ट हो गया ये। चले Against नहीं हुआ सर, ये law है। A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without Sir, jurisdiction। with respect, let अब me ये say, कितना इसके अंदर तजाद है, आप देखें ना मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है। I think there's no tazad and frankly, ये बता this is the law. अच्छा, ये तो चलिए- law कह रहे हैं, चलिए, ये चलिए, law जो बता रहे हैं। आपने तो नहीं लिखा, खैर यू कांट बी रिस्पॉन्सिबल। नहीं बट लॉ भी बता रहे हैं, No, no, सर, आगे ये चलें। ये सिर्फ Having- ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं। ये पढ़ते हैं सर। नहीं पढ़ते नहीं, सिर्फ बता दें, वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर। Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by section भाई, 20 अब आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना, अब जरा सिर्फ अभी बता दें ये वो पढ़ने किस से मेरा ख्याल है ये किस बड़ा जगह जाए शख्स। ये जजमेंट बता दें। क्योंकि चैलेंज की हुई है, इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप इसी देख को लें फिर ना। आगे पीछे नहीं, करना है। बिल्कुल देखें आप। जी। हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। जी ठीक है, तो हम ये एक या ये कर लें, अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं। हमें 1-2-3 सवाल हैं। जी। पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में, इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है, या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ECP ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है। वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो आप करें, मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है। ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये जरा देख लीजिएगा ना, कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का, मुझे नहीं पता, मैंने सरसरी तो बहुत सरसरी तौर पे देखा है। दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा। जी, ये पढ़ने के बाद सिर्फ के नहीं, सवाल पूछ लें। नहीं, मैं हम फिर आपको आप क्योंकि देखिए आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना, हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा, फिर आप मैं बता नोट कर लेता हूँ सर। जी अच्छा, अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए, पेज 33 पे, जी। पेपर बुक पे। जी ठीक है जी। इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए। जी, that in the impugned order, ये वाला जी, thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे। There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. अब पैराग्राफ 4 पढ़ लें। According, जी, इसको छोड़ दूं बाकी? हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा। Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide, and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void, and making PTI dysfunctional as a political Declaring party. the same void। जी। सही है ना जी। अब आप अपनी प्रेयर क्लॉज में आ जाइए। आपको अब कॉन्ट्री डिक्लेरेशन सीक करना चाहिए कि माय इलेक्शंस वर गुड, प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my respect. आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे। जी। वो इलेक्शन से उठेगा ना बात। जहां तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका। अब आप देखें आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से। नहीं अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था, ओके। या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं? ठीक है, अब मैं देना चाहे अभी दे दें, मैं अभी भी दे देता हूँ जी, मैं बाकी सोच भी लूंगा, दोनों कर लेता हूँ, चूज बोथ ऑप्शंस, कंकरेंट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए। In view of the foregoing, it is respectively prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें आप स्पेसिफिक्स में चले गए हैं A B C D E F, मगर जो प्राइमरी डिक्लेरेशन है आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन ऑन द इलेक्शन, बिकॉज ये इधर उधर की मीन मेखे निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस। इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है। या तो आप कहते हैं जी फिर वो वन पर्सन वन मैन चले, फिर फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले, वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम कहें करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में, ये भी आपका मौके हो सकता है, मगर ये आप मौके ले नहीं रहे, ठीक है। तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया। सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दें या फिर ये वापस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना। मैं अभी 19 पे था सर। हाँ नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन, ठीक है, एज योर कॉल। ठीक है सर, मैं I'll just complete कंक्लूजन this. को जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ। हाँ, लास्ट पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज ना पढ़ लें सर। आप ये पढ़ लेना पहले, फिर पढ़ लीजिएगा। नहीं आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें जरा जरा। प्रोविजन 25 पढ़ लेता हूं। पूछना चाह रहा हूँ, ये किसका जिक्र कर रहे The हैं? survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम agree करते हैं। आगे बढ़िए। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of. ये जंप हुआ जरा। They cannot be मेरा भी denied केस ये है, on the basis of on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो place की absurd जाए- है तो उसको strike down होना चाहिए, because वायरिस तो अंडर चैलेंज It है ही नहीं। is- अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law, वो इसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation अच्छा, sought to आगे be placed upon चलें, it. आगे चलें, 3 लाइन और पढ़ लीजिए। Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है। अभी सुनिए एक मिनट, पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है। जी। पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए, जी। जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें। It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका। वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो। तो 215 में तो पूरा केस चला आपका। नहीं, 215 में गलत चला दिया ना सर, इन्होंने गलत चलाया। इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is We are only. not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है, आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत ये टाइटल है। 215 में तो पूरा केस इसीलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं, 19 ऑनर्स पढ़ लेते हैं। 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो। जी। तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको। सर यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल, आई थिंक वी हैव कम a full circle of arguments. My first point was अच्छा, what we do is 215 जो था section. एक सेकंड जी, we'll certainly continue hearing you. We'll take a short break, ठीक है, because I want to attend to the other matter as well, right sir. and we will come back आधा घंटा
आधे घंटे में ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। additional submissions. We coming back. Okay.